हेलो एवरीवन। आज हम जो स्विम करने वाले हैं वो है 319 कॉर्फो। सो कॉर्फो का ये जो सम है इट्स बेसिकली अ वैक सम। देखो, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कॉर्फो ऑन द मार्केट वैल्यू बेसिस। तो हमें इस वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए हमें मोस्टली तीन चीज़ें लगती हैं, विच इज के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी विच इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड के पी विच इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो हमें बैंक लोन के बारे में देते हैं, सो वी विल रिक्वायर के बी एल विच इज कॉस्ट फॉर बैंक लोन। ठीक है। सो सबसे पहले बैक फाइंड आउट करने के लिए ऑन द ऑन ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस दिया हुआ है। या सो टू फाइंड बैक आफ्टर टैक्स ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेक इज फाइंडिंग के ई। फाइंडिंग के ई के लिए हम यूजुअली जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डी ओ अपॉन पी ओ। ठीक है। देखो, डी ओ अपॉन पी ओ, एक्चुअली डी ओ अपॉन पी ओ सिर्फ नहीं यूज करते। डी ओ के लिए डी वन प्लस जी, पीओ का वैसे वैसे रहेगा एंड देन यूज माइनस जी। ठीक है। ये ग्रोथ के साथ फॉर्मूला होता है। द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ कॉर्ड को have nominal value of 1 per share and x का current ex dividend market price of $6.1 per share. The dividend of 0.1 per share has just been paid. The 6% preference shares, ओके, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स डायरेक्टली स्टार्ट किया है। इन्होंने ग्रोथ का कहीं पे दिया नहीं गया है फिर सम में। पर इन्होंने नीचे एक्चुअली एक अलग ही इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, एक मिनट, पहले तो बैंक लोन भी दिया है इन्होंने, बट दैट इज ओके, उसके अपन बाद में रखते हैं। बैंक लोन के लिए बाद में रखते हैं, लेकिन इन्होंने के ही फाइंड आउट करने के लिए एक नई इंफॉर्मेशन दी है जो एकदम नीचे है, विच इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 3.5% पर ईयर, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 6.8% पर ईयर एंड इक्विटी बीटा ऑफ 1.25। सो दिस इज बेसिकली अपना कैपएम का फॉर्मूला यूज करने के लिए। मुझे बस एक बार नीचे का क्वेश्चन देखने दो। डिस्कस द व्यूज एक्सप्रेस बाय द थ्री डायरेक्टर्स ऑन। ठीक है। सो यानी कि ये इस चीज का सम होगा, ये बी बी वाला पार्ट। तो यानी कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो कैपएम की, ये की फाइंड आउट करने के लिए ही दी है। सो दिस फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज। सो हाउएवर वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला as the as the percentage of growth per year has not been provided to us. ठीक है। We would have to use the CAPM formula to derive at our answer KE. सो कैपएम के फॉर्मूला में एक्चुअली इसको आर ही बोलते हैं बेसिकली कैपएम में, बट इट्स ओके, के आर इज द सेम थिंग, which is return on equity. Ke is cost of equity. यहाँ पे आर एफ छोटा, देन इट इज प्लस बी, बीटा लिख देता हूँ मैं इसको पूरा, बीटा आर एम विच इज एस्टिमेट। तो मैं पॉइंट, इसको मैं ऊपर में वो लिख नहीं सकता मैं अभी, बट ठीक है। एस्टिमेट का बार आर एफ। तो मुझे तो मैंने हमें आर एफ जो है वो दिया हुआ है। सभी एक्चुअली में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कंट्रोल पेस्ट, control X, control V, risk premium. They have not used R, they have not given us RM, but they've given us risk premium directly. So that's also okay. 6.8 percentile. It is 1.25. RF is actually 3.5%. तो अभी हमें हमारा आदि जो है आराम से मिल जाएगा। दिस प्लस बीटा ब्रैकेट, अच्छा मल्टीप्लाई कर डालना है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट दिस। होप हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाए। हाँ, 12%। सो लेट्स जस्ट चेक कि अगर हमारा आंसर मैच करेगी नहीं, क्योंकि
कई बार एक्सेल बॉड मास नहीं पकड़ पाता, बॉड मास का रूल 10.3%, नहीं वो केपी है, आर ई इज 12%। सही है सही है सही है, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप जो आता है विच इज फाइंडिंग केपी। आई नो मुझे आंसर पता है बट डोंट वरी, ये हम फॉर्मूला के साथ ही करेंगे। केपी इज इक्वल टू डीओ डिवाइड बाय पीओ। केपी का काफी सिंपल होता है फॉर्मूला। 6% preference shares of COFRE Co have a nominal value of 0.75 and an ex-dividend market price of 0.6. Ex-dividend market price of 0.64. हमें मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी विच इज पीओ। पीओ के लिए हम क्या करते हैं, हम 6% ऑफ दिस ले लेते हैं विच गिव्स अस द मार्केट वैल्यू एक्चुअली। बट यहाँ पे एक्चुअली नॉमिनल वैल्यू पी हुई है। पीओ इज मार्केट वैल्यू, पी इज नॉमिनल वैल्यू। वो मैं वो याद नहीं हुई। आई थिंक इट इज मार्केट वैल्यू। तो डीओ इज प्रीटी क्लियर 0.64। फिर पीओ का जो डेटा है नॉमिनल वैल्यू, ये भी ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। नहीं, आई थिंक नॉमिनल वैल्यू हैव टू यूज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बैक के लिए। राइट, पीओ के लिए मुझे फाइंड ही करना पड़ेगा विच इज द मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं 6%। मतलब यूजुअली भी जैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं लोन नोट्स के लिए, वैसे हम डिविडेंड निकालते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो 6% ऑफ 6। सो ये आई होप ये आंसर हो। पता के पी इज इक्वल टू, काफी सिंपल चीज होती है ये कि दिस डिवाइड बाय दिस। फॉर्मूला तो सिंपल है। जस्ट हाँ नो, let's check what they have given us. Let's, yeah, actually if I have PO as which is lesser than DO, I will get answer in like 177%. So that's actually stupid. वो नहीं हो सकता आंसर। नॉमिनल वैल्यू 0.75 लेके देखें, we reached till 85% only. Hmm. No, I think maybe I have to have a look at this. KP is D upon PO. I got that. हाँ, इन्होंने भी 6% निकाला है। ओके, इन्होंने 6% 0.75 का निकाला है। एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 0.64, वो हमें दी गई है। दिस इज 0.64 एंड डिविडेंड हमें नहीं दिया है। हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ पॉइंट, वो हमें डिविडेंड निकालना था एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज 6% ऑफ 0.75 which is the per share. So nominal value is basically जैसे शेयर्स के लिए लोन नोट के लिए जैसे 100 होती है, वैसे नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उन्हें यहाँ पे 0.75 दी हुई है। तो वी हैव टू चार्ज, जैसे हम इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करते हैं वैसे हमें डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करना है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर समवॉट लाइक डिविडेंड। ऐसा कोई एक लाइन भी है इन स्टडी टेक्स्ट। then we get then we reach the right answer actually. Then we reach 7 point this, इसको अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूँ। 0.03%, या KP। नेक्स्ट इज KD which is cost of debentures। KD के लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, प्लस दे हैव गिवन अस हियर पोस्ट टैक्स। तो हमें सबसे पहले यहाँ से कॉर्पोरेशन टैक्स को निकालना पड़ेगा। लोन नोट इज 8%, नॉमिनल वैल्यू 100 for loan note, the market price is 1.03। okay, तो सबसे पहले फॉर्मूला what states is market value is equal to 1.03.5। okay, annual interest has been paid on the loan notes are redeemable in 5 years at a premium of the nominal value। so redemption amount जो है that is 100 का 10% extra, so we get 110 as a redemption amount। हमें अभी यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए, however interest will be post tax। so
एक्चुअली मैंने इतने सारे सम सॉल्व किए, मेरी इतनी सारी गलतियां हुई है ना कि इसमें कि इंटरेस्ट में हमेशा प्री टैक्स निकालता था। सो अब मेरे को बायर्ड हो गया है कि अभी पोस्ट टैक्स ही निकालना है। तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अभी हमें इंटरेस्ट का वैल्यू चाहिए। सो एज आई सेड इन द प्रीवियस वन ऑल्सो कि हमें नॉमिनल वैल्यू पे जो परसेंटाइल आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो वी हैव टू डू 8% ऑफ द लोन नोट्स। तो अभी सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट? मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ यार। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.08 इंटू 100 विच इज 8। नॉमिनल वैल्यू हमें दी है नीचे 100, देयरफॉर द आंसर इज 8 ब्रैकेट 1 माइनस पोस्ट टैक्स वैल्यू इज 0.2। मुझे लगता है 0.2 का टैक्स है, हाँ। तो ये भी हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डाला है, सो फॉर्मूला गलत जाएगा। 6.4 इज द इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग KD, we have to use the IRR formula if the value of KD is not given, मतलब if the direct value is not given। तो अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सी, तो हमें IRR निकालना होता है। एंड फॉर IRR वी नीड 2 NPVs। To find KD, we have to find the IRR, or we have to use the IRR formula for which we require 2 NPVs with 2 different discounting rates। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा अजीब दिखेगा। मैं यूजुअली टेक 5% एंड 15%, मेरे लिए वो थोड़ा वर्क कर जाते हैं। ठीक है, तो L N P V H को भी थोड़ा नीचे ले जाके फॉर्मूला में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। IRR इज इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट प्लस NPVL ब्रैकेट NPVL प्लस माइनस NPVH इंटू हाई इंटरेस्ट रेट माइनस लो इंटरेस्ट रेट। ये हो गया। ये लो इंटरेस्ट रेट हमको पता है कि ये है, वो हाई इंटरेस्ट रेट पता है कि ये है। वी नीड, सो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे हर जगह पे ना लिंक दे देता हूँ, मुझे डायरेक्टली आ जाएगा। मैं दिस लेवल में जब डायरेक्टली आंसर आता है तो बड़ा मजा आता है। दिस इज दिस माइनस दिस NPVL माइनस NPVH यहाँ जाएगा। देन मुझे इस ब्रैकेट का आंसर मिल जाएगा बड़े इजीली। और नहीं, मुझे दिस डिवाइड बाय दिस करना पड़ेगा। द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, प्लस ओ भी IRR में डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो L प्लस NPV, मैं बेसिकली बस लिंक दे रहा हूँ गाइस, देयर इज नथिंग एल्स, बस लिंक दे रहा हूँ। ये भी आ जाएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो। तो KD का वैल्यू होगा 200%। परसेंट देखना चाहिए 100 या क्या परसेंट में आएगा, मे भी आ जाए। लेट्स सी लेटर। इस अभी के लिए मेरे को 2 IRR के ये चाहिए,
डिस्काउंट रेट्स। तो 15% और 5%। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट निकाल लेता हूँ। डिस्काउंटिंग रेट मैं मेरे इसमें से देख लूंगा। हाँ, इसका तो सबसे पहले 1 ही आएगा। ओए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इज इक्वल टू सम, इक्वल टू सम। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज बोली, मुझे ये नेगेटिव में लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, नेगेटिव में लिखना है। NPVL would be this, NPVH would be this, क्योंकि ये हायर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, ये तो ठीक है। NPV for 5% देख लेते हैं। मुझे ये वाला वैल्यू 1 है, ये पता है मुझे, ये वाला वैल्यू भी पता है कि ये 1 है। मुझे अभी इंटरेस्ट चाहिए एट 5%। मैं एनुअलिटी फैक्टर लगाऊंगा, हाउ मेनी ईयर्स मुझे तक वो देखना पड़ेगा। 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स, 5%, 4.329, 4.329। रिडेम्पशन एट 550, और जो भी होगा वो मैं यहाँ पे 15% का कर लेता हूँ। नवा एनपीटी टेबल इटसेल्फ 3.352, ठीक है, ये जो भी आया। अगेन डिस्काउंट रेट अभी 15% के लिए, क्या 5% के लिए 0.784। यहाँ पे इट वुड बी 0.497। तो आई गेट KD एस 7.76%। वुड दैट बी राइट? चेक करते एक बार आंसर। 7.76%, they've got 7.44%, so they have taken 5 and 10%। दो वो पॉइंट का डिफरेंस आता ही है, so that's okay। हमारे 5 का आंसर कितना आया? 410.45। हमारा भी 10.45। हमारा ये नेगेटिव में जा रहा था, बट वी हैव यूज्ड दीज वैल्यूज करेक्टली ओनली। 3.352, 0.497, हाँ आई थिंक इट्स ओके, ठीक है, ना डिफरेंस चलता है। देन वी कम डाउन टू KD भी हो गया, KP भी हो गया। KL बैंक लोन लेना है, सो अभी फॉर फाइंडिंग बी KB, दैट इज, ये थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ता है। बैंक लोन, to find the cost of bank loan, they have said the cost of bank loan is variable। Sorry, my question था क्या? हाँ, the bank loan has variable interest rate, as they have suggested that bank loan has a variable interest rate, we would use the rate as per the KD because it's usually the same। देखो, बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आया है, so I would preferably use KD। Let's see what they have used। I hope they have not used KP। बैंक लोन के लिए they have used 7.44 इनका, which is R 7.76, which is okay। तो अब हमें वैक निकालना है, फाइंडिंग वैक, जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे उसका, ये लास्ट, फाइंडिंग द वैक, ठीक है। तो वैक का एक फॉर्मूला भी है, however I don't really use that formula। पर्टिकुलर्स, एक टेबल आता है, यूजुअली यूज दैट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोन नोट्स, बैंक लोन।
सबके केईस तो पता है, तो मैं कॉस्ट, तो मैं सबसे पहले ना cost लिख देता हूँ इन सब चीजों का यहाँ पे विद पर्टिकुलर परसेंटेजेस। तो इक्विटी इज 12%, प्रेफरेंस शेयर का इट इज 0.03%, हमारा ये आया है 7.76%, 87.76%, एंड के भी 0.76%। अब मैं दी गई थी मुझे लगता है हमें अभी जो दिया गया था वो, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। So this was given to us in millions. We have to find the number of shares in order to find us the market value. Basically ये जो था हमारा बुक वैल्यू था, हमें बुक वैल्यू को कन्वर्ट करना है मार्केट वैल्यू में। टू कन्वर्ट इनटू मार्केट वैल्यू हमें हमारा फॉर्मूला यूज करना है विच इज इक्विटी। स्पेशली इक्विटी के लिए हमारा फॉर्मूला आता है द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके लिए इट इज क्या, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू लिख देता हूँ इसके लिए मैं इस नाम को। ऑर्डिनरी शेयर्स इज 15, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 6, 8 एंड 5। क्या इनका हमें, अब हमें ढूंढना है इनका नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को इनके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर मुझे ढूंढना है, तो मुझे नॉमिनल वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होगा, व्हिच इज नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इज 1। नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड, नंबर ऑफ शेयर इज 1। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर्स मुझे सेम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 0.75। तो ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है guys, ठीक है। देन लेटर for debentures we have to do the same thing, divide by nominal value। nominal value इनका किसका कितना है 100, डिवाइड बाय 100। इसका कुछ हमें दिया नहीं है, ठीक है, as such। then you have to find the market value, and to find out the market value अभी के लिए क्या मार्केट वैल्यू चल रही है हमें उससे खाली इस चीज को क्लियर कट मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि फिलहाल इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो है 6.1, इसकी चल रही है 0.64 एंड इसकी चल रही है 103.5। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही है सारे आंसर्स, हाँ। सो लेट्स गो 6.1, ये थोड़ा ज्यादा है आई नो, बट मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। ये है 0.64 और इसका होना चाहिए 103.5। I think about it, I could have easily market price लिख दिया, market प्राइस पर यूनिट, हाँ ये सही लगेगा। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है मुझे, खाली इतने को मल्टीप्लाई करना है। बैंक लोन का ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइल लिख सकता हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे सम टोटल एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय कॉस्ट। इसको भी क्या क्या बोलूँ, इस पर वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसको वैल्यू का ही नाम दिया था। तो ये रहा अभी के लिए हमारा पूरा सम, इसको भी हम करेंगे डू इट, वी गॉट दिस आल्सो। अभी हमें वैक ढूंढना है, फॉर वैक what we would do is this divide by this market value into 100, basically value after cost and value मतलब बिफोर कॉस्ट। तो वैल्यू आफ्टर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे वैल्यू बिफोर कॉस्ट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, वी गेट बैक एज 11.25। लेट्स चेक उनका आंसर, क्योंकि मैं आई वाज नॉट श्योर इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, 11.25, 11.22, which is almost the same, 11.25, 11.22, that is because हमें यहाँ पे 17.76 आया था, ना शायद हमारा भी 11.2 आता। So this was right, ordinary shares was right.
तो 11.2 to 11.25 के मार्क्स मिल जाते हैं, that's okay. Not difference is allowed. Last we come down to the theory question. Basically, discuss the views expressed by three directors on how the investment should be financed. पहले question पढ़ लेते हैं. COFRE Co board is looking to finance investment and facilitates over the next 3 years. Forecast to cost are 25 million. Board does not wish to obtain further long-term debt. Finance is also unwilling to make an equity issue. ठीक है. This means that investments have to be financed from cash, which can be made available internally. Board members have made a number of suggestions about how this can be done. Okay. Express views expressed by the three directors on how the investment should be financed. Okay. So director भी director C का थोड़ा छोटा लग रहा है, but line wise जाता है. Director A has suggested that the company does not have a problem with funding new investments as it has cash available in the reserve, 29 million. If extra cash is required soon, COFRE could reduce its investment in working capital. कैश तो खाली 4 million है. ये रिजर्व्स की बात कर रहे हैं क्या? The cash available in reserves is not actually available, is it? मतलब वो reserves की तरह बस हमने रखा हुआ है. So मेरा जो opinion होगा director A के लिए would not be to use the reserves for funding new investments. I don't know, but they are okay. They are looking to finance investment that facilitates over the next 3 years. Okay. Uh, my suggestion then would be to fund in an investment that gives you a better NPV, because otherwise the investment would actually go to waste. मैं डायरेक्टर बी और सी के लिए पढ़ता हूँ. मैं थ्योरी और प्रेडिक्शन genuinely बहुत खराब है. Director B has suggested selling the building, which contains the company's headquarters in the capital city of 20 million. This will raise a large one of sum and also save an ongoing property management cost. Head office support functions would be moved to a number of different locations rented outside the capital city. मेरे को इसका पता है. So first of all, a cash flow forecast should be made in order so that we can determine how much what is the net present value or what is the cost that has been incurred between the management cost and if we rent any location outside, and then the comparison should be made that whether company is actually saving any money by selling off the office and renting it uh, and renting a location outside, or is still management cost better option. That is basically management costs are still lower than the rent paid outside the capital city. Obviously they have not sold it right now, so prediction or an estimate should be made. मैं लिखना है. Further, this NPV will not have anything positive. Every cost will be negative, and thus the least cost or the least negative NPV should be selected. Uh, Next is Director C has commented that although a high dividend has just been paid, dividends could be reduced over the next 3 years, allowing spare cash for investment. This is actually a good decision. It's actually a very good suggestion. Sorry, decision means suggestion, because if dividends are not paid, then they will have some cash available. इसके लिए कुछ comment करने के लिए है नहीं. Express the views expressed by shareholders on how the investment should be financed. By not giving dividend, are they though rolling a lot of cash? पढ़ना पड़ेगा. Director A is incorrect in saying that 29 million of cash reserves are available. See, I said that the reserves are 29 million, but this figure represents backing of all COFRE Co's assets and not just cash. COFRE Co
has 4 million of cash. Some of this could be used to investment, although the company will need a minimum balance of cash to maintain liquidity for its day-to-day operation. Right. ये मैंने नहीं बोला. Corp current ratio is 2.86. Oh, this may be a high figure depending on the industry Corfo is in. Actually, पहले क्या बोला था कि वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम ये भी बोल सकते थे कि उसके रिजर्व्स ज्यादा है कि नहीं है, बिकॉज करंट एसेट्स इज एक्चुअली other current assets is 16, which includes inventory and receivables major. Payables is 7 current. So they have also been payables. Corfco's current ratio is 2.86 annual DA. Corfco may have scope to generate some extra cash by reducing working capital. Okay, inventory levels could be reduced by just-in-time policies. Trade receivables could be reduced by tighter credit controls. Payments could be delayed to suppliers. All of these have possible drawbacks. Just-in-time policies may result in running out of inventory, and tighter policies of trade receivables and payables may worsen relations with customers and suppliers. Again, also, Corfo would have to maintain minimum levels of each element of working capital, so it seems unlikely that it could raise the minimum maximum to 25 million solely by doing what Director A suggests. Oh, right, हमें एक बोला गया था कि 25 million का cost करना है जनरेट. मैंने एक्चुअली उस पर ध्यान नहीं दिया कि 25 million हमें जनरेट करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए. तो हम ये भी बोल सकते थे कि a few partial investments can be made with the 4 million cash. However, there should be a minimum balance maintained in order to fund the working capital requirements. बोलना चाहिए था. Director A, selling the headquarters would raise most of the sum required for investment, assuming that Director B's assessment of sale price is accurate. However, Corfco would lose the benefit of value of site increasing in future. Oh, nice. Value of site increasing future. Basically, rental investment की बात कर रहे हैं वो. कि like property का रेट अगर आ जाए तो कल जाके कितना बड़ा होगा वैसा. Which may happen if the headquarters is in the prime location in the capital city. Being able to sell the headquarters would be subject to an agreement of lenders if the property had been used as a security for loan. Okay, security for loan. If it is, if even if it has not been used as security, the sale could reduce the borrowing capacity of company by reducing the availability of assets to offer us as security. The sale could reduce the borrowing capacity. ओके हाँ, बिकॉज हम अभी सिक्योर, अब हम कुछ एज अ सिक्योरिटी रख नहीं पाएंगे तो हमें लोन नहीं मिलेगा. राइट. हाँ, दे हैव नॉट सेड लोन बट दे हैव सेड बोरोइंग कैपेसिटी व्हिच मींस लोन. आगे, an ongoing commitment to property management costs of an owned site would be replaced by a commitment to pay rent, which might also include some responsibility of property costs for the locations rented. It is possible that good deals of renting are available outside the capital city. However, the longer term, the rent may become more expensive if there are frequent rent reviews. Right. There may also be visible and invisible costs attached to moving and splitting up the functions. There will be one-off costs of moving and disruption to work around the time of the move. The staff replacement cost may increase in staff. They are moved to a location which is not convenient for them and then leave. Senior managers may find it more difficult to manage functions which are in different locations rather than the same place. There may be a loss of synergies through staff in different functions not being able to communicate easily face to face anymore. बहुत सारे ना नॉन अटैच्ड पॉइंट्स बोले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि वो आंसर बड़ा करते जाते हैं. मैंने बोला था लीज मतलब मैंने एक्चुअली रेंट और बाय को कंपेयर करने के बारे में बोला था. दे हैव नॉट सेड उतना ज्यादा इसके बारे में. दे हैव जस्ट गिवन वन लाइन कि ये रेंटल कॉस्ट आगे जाके बढ़ जाएंगे. सो सिक्योरिटी बी के लिए एक्चुअली डायरेक्टर बी का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. डायरेक्टर सी इसका सबसे बेस्ट मेरे को लगा था ऊपर ऊपर से देखने के लिए. डायरेक्ट द डिविडेंड जस्ट पेड ऑफ 13.5 million seems a large amount.
Where have they said the amount? उन्होंने अमाउंट कहाँ बोली है 3.5 मिलियन की? ऊपर से उठाइए क्या? उठी? Compared this, I think they have compared this कि 10% प्रीमियम तो 10% और ये 100 के ऊपर 103.5 तो वो 3.5 माने ये माने 3.5% तो वो 3.5% प्लस 10% ऐसा 13.5% बन रहा है। ये थोड़ा ये डिविडेंड का अमाउंट में नहीं समझा बट ठीक है डिविडेंड है just paid of 13.7 seems to be a large amount compared to the total reserves if a similar level of fund is available for distribution over the next 2 years, not paying a dividend would fund of the forecast expenditure. Forecast expenditure कम हो जाएगा. However, shareholders may well expect a consistent or steadily growing dividend. A cut in dividend may represent a significant loss of income for them. If this is so, the shareholders may be unhappy about seeing dividends cut or not paid, particularly if they have doubts about the director's future investment plans. They may see this as a signal that the company has poor prospects, particularly if they are unsure about why the directors are not seeking finance from external sources. The directors question and it won't have a very good goodwill, is what they are trying to say. That the directors' dividend policy may also be questioned. The directors' dividend policy may also be questioned if the dividend just paid was one-off, okay, मतलब एक ही बार की है, high payment. Okay. Such a payment is normally made if a company has surplus cash and does not have plans to use it. However, the directors are planning investment and shareholders may wonder why a high dividend was paid when directors need money for investment. Yeah, that actually looks stupid now. Okay. कि अगर तुम्हें देने की जरूरत अगर तुम्हें पता था कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है तो तुम लोग ने क्यों दिया इतना हाई पेड dividend and now you are trying to reduce the future cost. They have not explained ki how company will manage to fund the 2.25 million of investment. They have just said कि कैसे company they have just said कि कैसे company uh, कैसे company would reduce the future cost or the future expenditure that they are going to incur. And they have just given कि हर एक डायरेक्टर के बोलने पे या उसके सजेशन का बस एक व्यू पॉइंट दो. They have not suggested, they have never mentioned the fact कि you know अब कैसे कंपनी फाइनेंस करेगी डिविडेंड को. यहाँ पे discuss the views expressed by the directors on how the investment should be financed. We should not be the one मेकिंग द डिसीजन कि डायरेक्टर ए बी या सी सही है. मैंने वो गलती की कि मेरे को लगा था कि सी सही है और पहले दो सही नहीं है बट या दैट्स ओके. बस हमें बताना था बस व्यूज देने थे अपने कि उनके डिसीजंस के ऊपर नॉट गिव आवर व्यूज. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. दिस वाज 319 for 4. Hope you learned something and bye.